श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किके श्रीवेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं दुर्विद्यानः हयग्रीवोपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे विशुद्धविज्ञानघ्नस्वरूपं विज्ञानविश्रान्वद्देक्षं दयानिधिं देहवृतां शरण्यम् देवं हयग्रीवहं प्रपद्ये दिशन्तु मे देव सदा त्वदीयादयादरङ्गाणचराकटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसामृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संसदकामधेनुं विशेषवित्पार्षदेष्णाथ विदग्धगोष्ठीसमराङ्गणेषु जिगीषतो मे कवितार्केन्द्राञ्जुपाग्रसिंहानमभ्युपेयाः व्याख्यामुद्रां करसरसजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीकेन षण्णां म्लवणश्रीरमधुविशदेरंशविप्लावयन्मा आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। Dear students, namaste. I'm so fortunate to meet you once again after a long time, and thanks to Sampradaya Manjari and Partha Swami and others, Vijayaraghvan Swami, for giving me the opportunity to teach once again. We are going to start with Pushpam 3. So far you have done in 0 level, level 1, level 2. I think it was the first batch we started during the Corona time, 2020. Kindly contact. It's a great opportunity for everybody sitting at home, learning and continuously, particularly learning in the early stage, the childhood. It's very, very important, and you will learn very faster than others. So learn it, okay? During when some students might have learnt with you, along with you, please call them, contact them, ask them to join quickly, okay? This week or next week or another week, let them join. Don't miss it. Opportunities will come rarely. It won't come very often, okay? So now Pushpam 3, Tritiyaha Bhagaha. So what are these things are there? Before that, I would like to inform you what was in level 0. Here it's going to be fully lessons, not these just simply sentences like early stages, and you will learn something from Raghuvamsham Kumara Sambhavam, okay? Raghuvamsham Kumara Sambhavam, and also from, but these lessons are not made actually. It was so difficult for the students, so we have not done. Okay, so we have Kalidasa, about Kalidasa, one short story, then Samskrita Bhashayaha Mahatva, from shlokas from Raghuvamsha, Surya, it's about Surya Devata, okay? Then Asmakam Deshaha, about our nation, Mahatma Gandhi, then Kumara Sambhavam, 15 shlokas from Kumara Sambhavam, about Himalaya, no Hitobadesha, okay? Hitobadesha is not there. Of course, from here Subhashtani will be there, okay? Not Niti Shatakam, Subhashtani will be there. Then grammar, further grammar, you will learn more grammar here, okay? This is what important. Literature can be learned by anybody, but learning grammar is very important in Sanskrit. Shabdrupani will revise the previous Shabdrupams, then we will come here, okay? Then verbs, Sandhi, yeah, this is very important, okay? Normally people used to teach even in the schools, if you see that Hindi and Sanskrit, they teach Sandhi in the early stages, okay? But we'll standardize the language, then we will introduce, so that the idea Swara Sandhi first will start, then Vyanjana Sandhi,
I think in the last book you have learned this. 2 you have learned. Here you are going to learn 4 or 5 sandhis, then suffixes. Okay, then exercise. Dhatu Parivartana means it's exercise. Adjectives, indeclinables, then conversation. So this is what we are going to learn in in grammar part. Okay. So in the previous part you have learnt the Shabdarupam, Akaranta, 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 okay, Akarantaha, Akarantaha. So these 2 mainly you learnt. Okay. And Ikaranta also, Ikaranta. The words ending with Ikaranta, Ikaranta. Ikarantaha, Ukarantaha, these are all taught to you. And this time we are going to, these are all noun, actually nouns, noun words. Here we are going to, in this we are going to teach you the pronouns, how to decline the pronouns. Okay, so that will be taught here. So this is what you are going to learn here. In the previous one, in the first level you learnt alphabets and words. Okay, alphabets and simple introduction of nouns, verbs. That's what you learned in the 0 level. Okay, in first level you learned again introduction of nouns, verbs, then verbs in detail. Okay, verbs in detail you learned in 5 lessons, 5 or 6 lessons. Yes, 5 lessons you learned in 5 lessons. Okay, nouns 1 lesson, nouns 1 lesson. Okay, then you learned the declensions of noun. Okay, how nouns are formed, that is the formations of nouns with the indeclinables. Prepositions. Okay, prepositions, you can say prepositions. Prepositions you learned in 5, again 6 lessons. 6 lessons were there. Then grammar. Okay, Shabdarupam, of course, declension of nouns, verbs, everything you learned. Mainly this was the lesson, book 1, Pushpam 1. This is Pushpam 0. This is Pushpam 0, alphabets, introduction of nouns, introduction of verbs. In Pushpam 1 you learned again introduction of nouns, introduction of verbs, and verbs in detail, 3rd person, 2nd person, 1st person. Okay, in detail you learned in detail. And prepositions, 6 lessons were there. Okay, and small paragraphs also you learned. Okay, you learned paragraphs. Okay, many paragraphs you learned. Then Pushpam 2, you started with past tense. Okay, past tense in I think 4 lessons. 4 lessons in past tense. And Shabdarupam, declensions of nouns, that is prepositions. Okay, prepositions. We can say prepositions with Ikaranta. Okay, Ikaranta words. This is what you learned. And many lessons you learned about various things like 5 epic books. Okay, 5 epic in Sanskrit. And you learned about Panini and Patanjali. Okay, Panini Maharshi, Bhartrihari, and you learned about the various the Panchatantra, how Panchatantra was born, Panchatantra was written. Then
how Sanskrit reached Western Sanskrit scholars. Okay, Western Sanskrit scholars. It was the last lesson. Actually, this was the last lesson. Okay, so these things were taught to you. So now it's a continuation. Okay, continuation of the previous things. But as Swami said, Partha Swami said that continuity is very, very important. Okay. Suppose you missed 1 or 2 classes, you go back to the YouTube videos and learn them. Just to go through. Okay. It happens because you have to attend some house program. Okay, your parents may go out. But as long as you are free, please attend. Okay. Use this 1 hour. So, in this lesson, again, you are going to learn lessons, mainly lessons, which comprises various grammatical parts. Okay. But actually, I'm going to start with grammar only. Okay. So we'll start with Shabdrupa so that we can learn so many things. Okay. We have to revise some Shabdrupam, Dhaturupam, then only we come to the lesson. Right. Regarding the book, it will be informed to you. Already as Swami has spoken to me, we will inform you. Okay. Shabdarupani, we are introducing these 2 Shabdarupams. It's you, I and you. How to decline. See, what is Shabdarupam? Actually, what is Shabdarupam? That everyone should understand. The Shabdarupam is nothing but what is that? Chin. They teach chin in Hindi. Chin. Ka, ke, ki. They'll teach. No? Suppose you learn Hindi in school, they'll teach you. This is kartane, karam se, karan. Then like this, no? Apadan, sampradan. What is the chin is used? Chin is nothing but prepositions. Okay. Sanskritam doesn't have any separate word. For there, no, in there it's ka, ke, ki, ke liye, ke vaste, साथ, उनके साथ, उनके लिए, per, may, par. These are the actually proportions. They are proportions. But in Sanskrit, we don't have such proportions. But instead, what happened? There are some suffixes add to that. Okay, suffixes add to that. Okay, suffixes add to that. So that to be practiced. Bhyam. So these are all suffixes. You have learned in the previous Rama Shabdrupam is declined. You all know that more or less close to those Shabdrupams only. What you have learned in the first book 1. Okay, Pushpam 1. More or less close to them only. But minor modifications will be there. Okay, some modifications will be there. So here and there. But since you are children, you learn very faster than the elders. But particularly, I'll tell you, Sanskritam, this language should be learned in childhood. That's very important. Okay. So, I think according to me, you have learned so far Rama Shabdrupam. I cannot type in the Sanskrit. There's a big problem here. Okay. Earlier I used to type in the previous time. Now the Adobe Reader, they have updated. I am unable to use the fonts, different fonts, because I am using only the light version. And here also I tried Google fonts and all. I am unable to type that also, and it comes boxes only. Okay. See, it's coming in English only. Unable to do. I have tried. I don't know how to use different languages in this. So even it's a big difficult for me also.
Even I type in the Word document and copy and paste also, it's not working. That's also not working. So Rama Shabdarupam, Rama Shabdarupam, or Lata Shabdarupam, that's ending with A. Then Phala Shabdarupam. These are all the Shabdarupams you have learnt already. You have revised. Okay, you have revised it, so you know them. It's not new to them, new to you, but you have to revise these things. Okay, we'll revise them. Then Muni Shabdarupam. Okay, Hari, Muni. Then Nadi, then Guru. These are all Pitru, Matru. These are all you have learnt already. These Shabdarupams you have learnt already. But one thing you all should know, that the basic is Rama and Rama. These two Shabdarupams are basic for all others. But when it comes to other Shabdarupam, mainly the singular will be different everywhere, whereas dual and plural almost similar in all the Shabdarupams, almost here and there. All the masculine will look similar. This is feminine. In case of feminine, the whole Shabdarupam looks similar to Rama Shabdarupam or Lata Shabdarupam, similar only. Sarva, Sarve, Sarvaha, Lata, Late, Lataha. The ending part. You are supposed to learn the ending part mainly. Okay, look at the ending part. Will look similar. Maybe one or two here and there. See, Lata, Late, Lataha, Sarva, Sarve, Sarvaha, Latam, Late, Lataha, Sarva, Sarve, Sarvaha. Similar. But here, Lataya, Latabhyam, Latabhi, Sarvaya, Lataya, Sarvaya, Sarvabhyam, Sarvabhyam, Sarvabihi, Latabihi, Sarvasyai. But whereas there it is Latayai, Latabhyam, Latabhyaha, Sarvasyai. Sa is extra here. Okay. Sarvasyai, there Latayai, Latabhyam, Latabhyaha, Sarvabhyam, Sarvabhyaha, Sarvasyaha. Again, sa is extra. So we should understand. Okay. See, when I was like you, I started learning Sanskrit. Okay, even in childhood. But that time it was very difficult for me. Only Rama Shabdarupam. That is very, very beginning they used to teach. It took me more than 20 days to by heart. But after that, within 1 month, I recited around 150 Shabdarupams because I understood this technique. My teacher, I remember my teacher was Damodaran Swami. Okay, he was teaching me the Shabdarupam. Kadatur Swami was teaching me Shabdarupam. And initially I could not learn it. Swami gave me time. Okay, we will not tell the names of our teacher, so we will tell by their name only, by their place only. Kadatur Swami, Annadur Swami, like this only. So what happened? Kadatur Swami was teaching me every day. Swami told that every day he will come. He used to spend first 5 minutes with me only. Okay, 5 minutes he will call me. You tell, I will tell, you repeat. So like this, it took 15 days for me. So Swami told, tomorrow you are telling. So 16th day, 15, 14, 13, 14, 15 onwards, I practiced myself. Then 16th day, I recited like anything. Then Swami told, try Strilinga. But next day I told Strilinga without any trouble. Then after that, within a month, Swami gave a book, Shabdarupam book. I went through everything. Swami told, you are able to tell so many number of. Yes. Within a month, I recited around 150 Shabdarupam. So nothing but you have to catch this. What is the difference, the technical things here? What is this? So I started telling small corrections. It happened here and there. Otherwise, I went like anything. So you also like that only. So you have to practice. Okay, practice. That's very, very important. So it is like Lata. See, all Strilinga Shabdarupam are like that only.
Napumsakalingam, no need to ask, it is just like pulling only. Only first two vibhaktis are similar. Okay? The third onwards, okay, what is here in pullingam, what is here, the same is repeated in Napumsakalingam. Okay? It took for me to understand more than 10 days. So then I started learning faster. So you also understand. So first you understand. Don't approach this like English. But English should be a medium of language to convey you. Okay? Okay. So we'll start now. We'll start with Sarva Shabdrupam today. Sarva means all. Okay? Let me read this. Let me erase all these things. Okay? So that you will not get confused. Now clear. So let me start with the Shabdrupam. So you will repeat. Okay? Akarantaha pullingaha. Repeat 2 times. Okay? No, don't unmute. Repeat. Akarantaha pullingaha. Sarva shabdaha. Sarvaha. Sarvau. Sarve. Again. Sarvaha. Sarvau. Sarve. Sarvam. Sarvau. Sarvan. Again. Sarvam. Sarvau. Sarvan. It's like Rama, Ramo, Ramaha only. Don't worry. Okay, not much difference. Slight difference only. Okay. Next, third. Sarvena, Sarvabhyam, Sarvaihi. Sarvasmai, Sarvabhyam, Sarvebhyah. Sarvasmat, Sarvabhyam, Sarvebhyah. Sarvasya, Sarvayoho, Sarvesham. Sarvasmin, Sarvayoho, Sarveshu. Again, once again. Sarvaha, Sarvau, Sarve. Sarvam, Sarvau, Sarvan. Sarvena, Sarvabhyam, Sarvaihi. Sarvasmai, Sarvabhyam, Sarvebhyah. Sarvasmat, Sarvabhyam, Sarvebhyah. Sarvasya, Sarvayoho, Sarvesham. Sarvasmin, Sarvayoho, Sarveshu. He Rama, He Ramo, He Raman இருக்கு இல்லையா, அது கிடையாதுங்க. ஓகே, சர்வ அப்படின்னா pronoun. ஓகே, pronounக்கு ஹே ராம, ஹே ராமோ, ராமாமை, ஹே சர்வ, ஹே சர்வோ, ஹே சர்வே கிடையாது. ஓகே. இது யார் படிப்பீங்க? ஒரு 4-5 பேர் படிங்க. 4 பேரோ 5 பேரோ படிங்க.
ஆச்சு படிங்க. யார் படிக்கல? கூப்பிடுறபடி யார் மாடரேட்டரோ மாடரேட்டர் கூப்பிடுறபடி படிக்கணும். சரியா? सर्व अकारान्तः पुल्लिङ्गः सर्वशब्दः सर्वः सर्वौ सर्वे सर्वं सर्वौ सर्वान् सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु அங்க சர்வேனன்ற சர்வனன் போட்டுக்கடு. சர்வேன தப்பு. ஓகே, சர்வேனன் இருக்கும். சர்வேன. அடே அடுத்தது கேஷவ் சொல்லணும். अडे दासनदि अकारान्तः पुल्लिङ्गः सर्वशब्दः सर्वः सर्वौ सर्वे सर्वं सर्वौ सर्वान् सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु सर्वः सर्वौ सर्वे सर्वं सर्वौ सर्वान् सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु. सकारान्तः पुल्लिङ्गः सर्वशब्दः सर्वः सर्वौ सर्वे सर्वं सर्वौ सर्वान् सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु. வெரி குட், வெரி குட். அடே 4 பேர் வாசிச்சுட்டா இன்னும் வாசிக்கணுமா? ஸ்ரீலிங்கம் படிக்கலாம். அடே now strilinga shabd roopam. Okay, now I'll teach you strilinga shabd roopam. अकारान्तः पुल्लिङ्गः अकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सर्वशब्दः. See, sarva is ending with a, so it is akarantah. Okay, right? So akarantah strilingah sarva shabdah. Sarva sarve sarvah sarvam sarve sarvah सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः. So this should be सर्वाभ्यां, okay, not सर्वयोः. सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः सर्वस्याः सर्वयोः
सर्वासाम् सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु. Again, let me read, please repeat. अकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सर्वशब्दः. सर्वा सर्वे सर्वाः. सर्वां सर्वे सर्वाः. सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः. सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः. सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः. सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासाम्. सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु. Okay, now read. 4-5 students, please read. Again. Again, Prahlada Varadan. Again. अकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सर्वशब्दः. सर्वा सर्वे सर्वाः. सर्वां सर्वे सर्वाः. सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः. सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः. सर्वाभ्यः. सर्वाभ्यः. सर्वस्याः सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः. सर्वाभ्यः. सर्वाभ्यः. सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां. सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु. वेरी गुड. அடுத்தது உத்தமம் உத்தமம். अडियन केशव. अकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सर्वशब्दः. सर्व सर्वा सर्वो सर्वा. सर्वा सर्वे सर्वाः. सर्वा सर्वे सर्वाः. सर्वां सर्वे सर्वाः. सर्वया सर्वाभ्यां सर्वेभिः सर्वाभिः. सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः. सर्वयो सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः. सर्वस्याः முள்ளமா அர்ஜென்ட்டே வேண்டாம், முள்ளமா படி. सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः. सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां. सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु. அடே அடுத்தது கோசக்கன் வாசிக்கலாடே. अकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सर्वशब्दः. सर्वा सर्वे सर्वाः. सर्वां सर्वे सर्वाः. सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः. सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः. सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः. सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां. सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु. अडियन धन्योस्मि. धन्योस्मि. अडियन अकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सर्वशब्दः. सर्वा सर्वे सर्वाः. सर्वां सर्वे सर्वाः. सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः. सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः. सर्वस्या सर्वयोः सर्वाभ्यः सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां. सर्वस्यां सर्वयोः सर्वासु.
அடியன் தெரியும் அடியன் 4-5 பேர் படிச்சாச்சு படிச்சாச்சா ரைட்டா இப்போ வெரி சிம்பிள் शब्द रूपम अकारान्तः नपुंसकलिंगः सर्व शब्दः न सर्व is ending with a anala अकारान्तः okay so अकारान्तः नपुंसकलिंगः सर्व शब्दः सर्वं सर्वे सर्वाणि सर्वं सर्वे सर्वाणि so what is next for next we have to go upwards okay from 3 here onwards you have to read okay 3 to 7 so the same here and there both are similar okay sarvena sarvabhyam sarvaihi repeat now sarvena sarvabhyam sarvaihi सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु okay now start अडियन् सर्वं सर्वे सर्वाणि सर्वं सर्वे start with अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सर्वशब्दः okay अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सर्वशब्दः सर्वं सर्वे सर्वाणि सर्वं सर्वे सर्वाणि सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु very उत्तम अडियन् केशव राशि करेला अडियन् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सर्वशब्दः सर्वं सर्वे सर्वाणि सर्वं सर्वे सर्वाणि सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु धन्यवाद अडियन् श्रीरङ्गप्रिया राशि करेला अडियन् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सर्वशब्दः सर्वं सर्वे सर्वाणि सर्वं सर्वे सर्वाणि सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु अडियन् अडियन् वासिக்கிறேன் अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सर्वशब्दः सर्वं सर्वे सर्वाणि सर्वं सर्वे सर्वाणि सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु अडियन् धन्योऽस्मि अडियन् அடுத்தது ஆதித்ய சௌந்தரராஜன் சேவிக்கிறேளா அடியன் ஆதித்ய சௌந்தரராஜன் அடியன் கேக்குதா
அடியன் அடுத்தது கோசம் சேவிக்கிறீங்களா? अडियन् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सर्वशब्दः सर्वः सर्वं सर्वे सर्वाणि सर्वं सर्वे सर्वाणि सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वे सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्यै सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु अडेन धन्यवाद. अडियन இப்போ ஸ்ரீஷா சொல்றீங்களா? अडियन् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः सर्वशब्दः सर्वं सर्वे सर्वाणि सर्वं सर्वे सर्वाणि सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु. अडियन् புரிஞ்சுதா? சந்திரம் புரிஞ்சுதா? அடியன் ஒரு சந்தேகம் இருக்கு. சொல்லுங்க அடியன். அடியன் இப்போ சர்வம் சர்வே சர்வாணின்னு சொல்றோமே, அங்க பிரத்யேகம் என்னது? சர்வ அப்படின்றது தான் பிரகிருதி சப்தம். சர்வன்றது தான் இங்க சப்தம். இல்ல இங்க வந்து மெயின் வேர்டு வந்து சர்வ. அது வந்து ஃபார்மேஷன் ஆறுது சர்வம் சர்வே சர்வாணி சர்வம் சர்வே சர்வாணின்னு வருது. இதுல அங்க என்ன பிரத்யேகம்? பிரத்யேகம் இங்க எதுவும் பிரத்யேகம். இது வந்து என்னன்னா, இது வந்து பாணினி சூத்திரத்துல வந்து பாணினிய கிராமர் நாம இந்த சம்ஸ்கிருதத்துல ஃபாலோ பண்றது வந்து பாணினியன் கிராமர் பர்ஃபெக்ட்லி மேட்ச் ஆயிருக்கு. இந்த வேர்டு எல்லாமே வந்து ஆஸ் பர் தி ரூல் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. நம்ம இஷ்டத்துக்குலாம் வந்து வேர்டை வளைக்க முடியாது. என்னன்னா புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப சர்வன் இருக்கு அப்படின்னா இதுல என்ன பண்றாருன்னா சு ஆப்ஜஸ் அமோக்ஷஸ் டாபியாம்பியஸ் நேபியாம்பியஸ் கதிபியாம்பியஸ் நஸ்வோசாம் நீ ஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு 21 சஃபிக்ஸஸை யூஸ் பண்ணி, அதாவது சர்வ பிளஸ் சு அப்படிங்கிற வேர்டை ஜாயின் பண்ணி இந்த சூன்றது வந்து அதுக்கப்புறம் சில சூத்திரங்களை அப்ளை பண்ணும் பொழுது அது சர்வஹான்னு மாறிடும். ஓகே, அதே மாதிரி சர்வ இந்த மாதிரிதான் சர்வ பிளஸ் சு ஔஜஸ் அது மாதிரி சொல்லி 21 இது இப்ப சொன்னேன் இல்லையா, அந்த 21 பிரத்யங்களையும் ஒரு இதுக்கும் ஒன்னொன்னா, அதாவது தித்யா பக்தி ஏகவச்சனம் இது, தித்யா பக்தி திவச்சனம் இது, தித்யா பக்தி பகுவச்சனம் இது, திருத்தியா பக்தி ஏகவச்சனம் இதுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்னொன்னுக்கு ஒன்னொன்னு அவர் கொடுத்திருக்காரு. அதை வச்சு அதுக்கப்புறம் சூத்திரத்தை அப்ளை பண்ணும் பொழுது ஒரு சூத்திரம் அப்ளை பண்ணும் பொழுது இந்த மாதிரிலாம் சப்தம் மாறுறது. இது எல்லாத்துக்குமே ரூல்ஸ் படி மாறி இருக்கு. இந்த இடத்துல இப்படி வச்சுக்கோ அந்த இடத்துல அப்படி வச்சுக்கோன்றதெல்லாம் கிடையாதுங்க. எல்லாத்துக்குமே இப்ப இந்த 21 சப்தம் வந்திருக்கு இல்லையாங்க, சர்வங்கிறது வந்து ஸ்ரீலிங்கத்துல 21 சப்தம் மாறி இருக்கு இல்லையா, இந்த 21க்கும் ரூல் இருக்கு. அதே மாதிரி இங்க 21 இருக்கு இல்லையா, இங்க 21 இருக்கு இல்லையா, இந்த 21 ரூல் படிதான் வருது. அதே மாதிரி நபும்சகலிங்கத்துல மூணாவது விபக்தியில இருந்து, அதாவது பிரதமா விபக்தியும் தித்யா பக்தியும் ஒரே மாதிரி இருக்கு பார்த்தாக்க இல்லையா, இதுவும் ரூல் படிதான். நபும்சகலத்துல இந்த மாதிரி வச்சு போன்ற அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் கிடையாது. அதாவதுன்னா இந்த இடத்த தூக்கி அங்க வையி, அதை தூக்கி இங்க வையி, இந்த இடத்துல இப்படி வச்சுக்கோ, இந்த இடத்துல சர்வம்னே இருக்கட்டும், சர்வம் சர்வே சர்வாணின்னு அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஒன்னொன்னுக்கும் ஒரு ரூல் இருக்கு இதுல. அதே மாதிரி இங்க அண்ணா இதுக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்குமே ரூல் இருக்கு. ஏன் இந்த இடத்துல இந்த நா வரணும், அந்த இடத்துலயே அந்த நா வரணும், ஏன் சர்வாசாம் வந்திருக்கு, இதையே சர்வானாம்ன்றது இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா சர்வாசாம் தான் மாறுறது. அது அந்த இடத்துல கொடுத்திருக்கிற சஃபிக்ஸ கொடுத்து நஸ் ஓஸ் ஆம்ன்ற சஃபிக்ஸ் இந்த இடத்துல வருது. ஓகே, ஆம்ன்ற சஃபிக்ஸ். ஓகே, அந்த ஆம் அப்படிங்கிற சஃபிக்ஸ கொடுத்து அதே மாதிரி இந்த இடத்துலயும் ஆம் தான்.
சர்வ ஆம், சர்வ பிளஸ் ஆம், இது வந்து ஷஷ்டி பக்தி பகுவச்சனம். அதே மாதிரி சர்வ பிளஸ் ஆம். இதுக்கப்புறம் ஸ்திரீலிங்க சப்தத்துக்கு உண்டான சூத்திரங்கள்னு இருக்கு. அதே மாதிரி புல்லிங்க சப்தத்துக்கு உண்டான சூத்திரங்கள் இருக்குது. அதெல்லாம் அப்ளை பண்ணும்போது கடைசியா மாறுறது இது வந்து எப்படி மாறும் அப்படின்னா சர்வாசாம் நீங்க மாறும். ஸ்திரீலிங்கத்துல, புல்லிங்கத்துல சர்வேஷாம்னு அது மாறும். இது வந்து ஃபார்மேஷன், அதாவது கெமிக்கல், எப்படி கெமிக்கல் ஃபார்முலா சொல்றோமோ அதே மாதிரி இங்க இந்த ஃபார்முலா. இது வந்து வேர்ட் ப்ராசஸ். ஓகே, வேர்ட் இப்படிதான் ப்ராசஸ் ஆகி வந்திருக்கு சம்ஸ்கிருதத்துல. இப்ப அந்த ரூல் படி வரல அப்படின்னா அது சம்ஸ்கிருத சப்தம் கிடையாது. நல்லா புரிஞ்சுங்க, முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லைன்னா அது சம்ஸ்கிருத சப்தம் கிடையாது. அதே மாதிரி இங்க அகாராந்தகா, ஏன் இது அகாராந்தகா சொல்லணும் அப்படின்னா அதுக்கும் ஒரு ரூல். அகாராந்தகான்ற வேர்டு ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கே வந்து இது இருக்குது, அது பேருனா ரூல் இருக்குது. எல்லாமே ரூல் தான் இதுல, ஒன்னொன்னும் எவ்ரிதிங் ரூல் தான் மொத்தமே இங்க. சரியா? அதனாலதான் சம்ஸ்கிருதம் அப்படின்னு சப்தமே இருக்கு. கரெக்ட். ஒன்னொன்னுக்கும் அதாவதுனா இப்ப இந்த புஸ்தகத்துல, இந்த புஸ்தகம்னு இல்லை, எந்த சம்ஸ்கிருத புஸ்தகத்தை எடுத்தாலும் அது மொத்தம் பாணினியுடைய வியாக்கரணத்தை வச்சுதான் இருக்கே. மொத்தமே ஒரு சொல்லுமே பாணினிய வியாக்கரணத்தை வச்சுதான் இருக்கு. ராமாயணத்துல வந்து மகர்ஷி வால்மீகியுடைய ராமாயணத்துல ஒரு ஆர்டிகிளே இருக்கு இந்த மாதிரி, இதெல்லாம் வந்து பாணினி கிராமத்துல வரலன்னு. ஆனா அதையும் சுவாமி வந்து மகர்ஷி பாணினி வந்து அதை சரி பண்ணியிருக்காரு. எப்படி பண்ணிருக்காருன்னா ஆர்ஷத்வாத் சாது, ஆர்ஷத்வாத் சாதுன்னா அது சொன்னது யாரு? மகர்ஷி. மகர்ஷி சொன்ன சப்தத்துல வந்து நீ தப்பு கண்டுபிடிக்காத அப்படின்ட்டாரு ஒரே வார்த்தையில. அவர் சொல்லலாம்பா, நீ சொல்லக்கூடாது அப்படின்ட்டாரு. ஏன்னா அவர் எழுதுற வேகத்துல என்ன சொல்லியிருப்பாரு, அவர் 1-2 மிஸ்டேக் என்ன இருக்கலாம். நீ அவர் சொன்னதுலாம் நீ வந்து அதை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதையும் வந்து அடைச்சிட்டாரு. அதே இது பண்ணிட்டாரு, ரூலை சொல்லி ஆர்ஷத்வாத் சாது. அவர் வந்து மகர்ஷினால அவர் நீ வந்து ஃபாலோ பண்ணாதன்ட்டா, அவ்வளவுதான். ஆமா, சம்ஸ்கிருதம் அப்படின்னு சப்தத்துக்கே சம்ஸ்காரங்கள்ல இருந்து வந்தது அப்படின்னு. ஆமா, சம்யக் கிருதம் சம்ஸ்கிருதம், நன்றாக செய்யப்பட்டது. அபசப்தங்கள் இல்லாம தூஷிதமான சப்தங்கள் இல்லாம வியாக்கரண பரமா இல்லாத, அதாவது வியாக்கரணத்தை அனுசரிச்சு இல்லாத சப்தங்கள் எல்லாம் சரி பண்ணி கொடுத்தது அது. ஒன்னொன்னுத்துக்கும் இது உண்டு. அது பேருனா பாணினிய வியாக்கரணத்தில இருந்து எல்லாத்துக்குமே சமாதானம் இருக்கிறது. அப்புறம் சரி, இப்போ இது முடிச்சாச்சு. கொஞ்சோண்டு காளிதாசனை பத்தி அப்படி படிச்சுட்டு அப்புறம் கிராமரை பார்க்கலாம். டெய்லி கொஞ்சம் கிராமர் பார்ப்போம், அப்பப்போ கிராமர் பார்ப்போம். சரி, இப்போ சப்தம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். லெசன் கொஞ்சோண்டு பார்க்கலாம். கொஞ்சோண்டு பார்த்துட்டு இன்னைக்கு இதோட காளிதாசா பாடः 1. प्रथमः पाठः कालिदासः. ओके, श्लोकम. लेट मी रीड द श्लोक. நான் ஸ்லோகத்தை படிக்கிறேன், எல்லாரும் திருப்பி படிங்க, திருப்பி சொல்லுங்க. पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव. திரும்பியும் पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव. திரும்பி நான் படிக்கிறேன், எல்லாரும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः
अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव. ओके, श्लोकத்தை படிங்க. ஸ்லோகத்தை 3 பேர் 4 பேர் படிங்க. पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासः अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव. उत्तम. पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासः अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव. पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासः अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव. अडियन श्रीशा वैसे करेगा. अडियन पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासः अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव. अडियन पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासः अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव. अडियन अर्थ केशसे. पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासः अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव. पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासः अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावात् अनामिका सार्थवती बभूव. முடிஞ்சதா? அடியே 4-5 பேர் இத படிச்சுட்டா இன்னும் அடிஷனமா இல்ல போறோம். இன்னைக்கு இதோட நிறுத்திக்கலாம். இன்னைக்கு அல்பாரம்பா க்ஷேமகரஹா இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அடுத்த கிளாஸ்ல நிறைய படிக்கலாம். ஓகேவா? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. सर्वस्तरतु दुर्गाणि, सर्वो भद्राणि पश्यतु, सर्वकामानवाप्नोतु, सर्वत्र नन्दतु. ओम शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवादः. शुभरात्रिः. पुनर्मिलामः. धन्योस्मि. எல்லாரும் அடுத்த கிளாஸ் மறக்காம ஜாயின் பண்ணுங்க. மற்றவாளுக்கும் சொல்லுங்க.